बजनी चाहिए। ज़ोरदार तालियों के साथ स्टेज पर वेलकम करेंगे डॉक्टर देवीश जैन, आर चेयरमैन ऑफ सोपा। ज़ोरदार तालियों के साथ मिस्टर, ये ज़ोरदार तालियां नहीं, I can see a lot of you here. Yes, everybody, please clap together. Please, this is my request to each and everyone. Come on. Show your love by your clap, please, everyone. All right. And next, मैं बुलाने जा रही हूँ मिस्टर नागेश गोइंका on this stage, मिस्टर गिरीश मतलानी सर, मिस्टर राहुल मूथा सर, D.N. पाठक सर, शताद्रु चट्टोपाध्याय सर, निशांत वरवड़े सर, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी सर, एंड प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा सर. Please, everybody, come on. Yes, come on everyone, जरा तालियों के साथ स्वागत करिए. देखिए ये जो जोश है ये आप सबके साथ मिलकर के आएगा और आप कितने एक्टिव हैं. मैं हमेशा स्टेज पे आकर के जरूर बोलता हूं कि तालियां बजाने से दुख दर्द भाग जाते हैं और तालियां जो नहीं बजाते हैं उनके पास ये दुख दर्द पहुंच जाते हैं. तो जिंदगी हमारी बहुत खूबसूरत है और ये जिंदगी ऐसी ही चलती रहे जहां कोई भी दर्द कोई भी दुख ना हो. तो आज सब मिलकर के एक साथ तालियों के साथ वेलकम करें और हमारी डिग्निटीज हमारे साथ आकर के यहाँ पे जुड़ चुकी है. सो लेट्स गो फॉर लैंप लाइटिंग. अच्छा, जब तक हमारे डिग्निटरीज एंड हमारे गेस्ट स्टेज पर ज्वाइन करते हैं, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सोपा. 1979 में सोपा की स्थापना हुई थी हमारे इंदौर, हमारी क्लीनेस्ट सिटी जहां पर आज हम यहां पर मौजूद हैं. यहां से हमारी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोपा ऑपरेट करती हैं एंड वी ऑल आर ग्रेटफुल, वी ऑल आर प्राउड कि आज और कल 8 एंड 9 अक्टूबर को ये हमारे 2 दिन जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं साल भर, आज हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं. आप लोगों में से कितने लोगों ने मर्फीज लॉ पढ़ी है? कुछ तो बोलिए ना. मर्फीज लॉ, उसमें पहली लाइन ये है कि समथिंग विल ऑलवेज गो रॉन्ग. अगर आप लंबी क्यू में खड़े हैं और छोटी क्यू की तरफ जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, तो वो छोटी वाली क्यू बड़ी हो जाएगी, आपको और देर लगेगी. तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है. 10 बजे प्रोग्राम शुरू करना था, थोड़ा लेट हो गए हैं फॉर वेरियस रीजंस, तो थोड़ी सी माफ़ी दीजिए और बर्फीला को याद करिए. हमारे चीफ गेस्ट अभी आ रहे हैं 1 मिनट में, विजय पॉल शर्मा जी. तो अभी शुरू करते हैं 1 मिनट में. कैरी ऑन. क्या गेस्ट को आने दो. ठीक है, लैंप लाइटिंग करें क्या पहले या फिर नॉर्मली बोल दूं? पहले उनको आने दो सर को. ठीक है. पहले बुके थे, बुके था. फिर लैंप. हाँ जी. और वो सरस्वती वंदना रहने दो. अच्छा, लेडीज एंड जेंट्स, ठीक है. या सर लैंप लाइटिंग के बिफोर ही सरस्वती वंदना लेडीज एंड जेंट्स बजा दो. है ना, ऐसा करेंगे. जब लैंप लाइटिंग कराएंगे मैं उनको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि आप उसी के बीच में बजा दीजिएगा, अलग से नहीं करेंगे. ठीक है, शुरू कर. माइक चलो. तब तक ये बोल दो. हाँ, पकड़ो. वंस अगेन एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए. मुझे यहाँ पे तालियों में बहुत कमी लग रही है. वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर डे, सो तालियों की गड़गड़ाहट बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए कि बाहर तक, इस कॉन्क्लेव के बाहर तक आवाज़ें जानी चाहिए. कम ऑन एवरीबॉडी, दिखाइए कितनी एनर्जी है आप में. कम ऑन एवरीबॉडी. एंड इसी के साथ स्वागत करते हुए हम आज के इस इवेंट में आगे बढ़ेंगे. सोपा, अ सोयबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने कहा हमारे देश की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है. एंड मैं कहना चाहूँगी हमारे फार्मर्स और प्रोसेसर्स की मदद करती हुई आई है, क्योंकि हमारे सोपा का उद्देश्य ही ये है कि हमारे फार्मर्स और प्रोसेसर्स इनमें अपना रोल प्ले करना. सोपा का मेन एम है सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, किसानों की इनकम बढ़ाना और सोए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना. सोपा रिसर्च, ट्रेनिंग और ग्लोबली बहुत शानदार काम कर रही है. गोल्डन बीन की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. और इसी के साथ सोपा से हम सभी जुड़े हैं. वी आर पार्ट ऑफ दी सोपा एंड वी शुड बी प्राउड. इफ़ यू आर प्राउड, इफ़ वी आर प्राउड, सो हमें वो दिखाना पड़ेगा. एंड हम कैसे दिखाएंगे, बताएं ज़रा मुझे, कैसे दिखाएंगे?
आपको लग रहा होगा बार बार तालियां बजवा रहे हैं, क्या हो रहा है ये, बट ये बहुत ही अच्छा जरिया होता है। तालियां बजाने से क्या होता है, हमारे हाथों में फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो अपने दिल को बहुत प्यार करते हैं वो ज़रा बेशुमार और ज़ोरदार कड़ाके की तालियां ज़रूर यहाँ पर सुनाते रहेंगे। काफ़ी लोगों ने तालियां नहीं बजाई हैं, ऐसा लग रहा है उनका दिल उनके पास नहीं है, कहीं और है, ऐसा है क्या? ओके, मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है हमारे इवेंट को आगे लेकर जाने का एंड हमारे डिग्निटरीज यहाँ पर आ चुके हैं। आ गए ना? हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे एंड ये हमें इंडिकेशन है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे गेस्ट का। सो आई रिक्वेस्ट कि हम सबसे पहले हमारे गेस्ट का वेलकम करेंगे और बुके के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डिग्निटीज से कि प्लीज़ सर हमारे गेस्ट का वेलकम करें विद बुके एंड एवरीबॉडी। आप सभी की तालियां भी हों साथ में, क्योंकि ये प्यार, ये साथ आप लोगों के द्वारा ही इस स्टेज पे आने वाला है। ये बहुत ही अमेजिंग मॉर्निंग है, एक और आज सेकंड डे है जब हम सब साथ में मिल करके बहुत सारे आइडियाज़ को शेयर करने वाले हैं। और हमारे गेस्ट जो हमारे साथ आ चुके हैं, आप सब भी हमारे साथ हैं और आप सभी के साथ मिल करके इस मोमेंट को और स्पेशल बनाते हैं। शताद्रु सर यहाँ पर मौजूद, उनका वेलकम करते हैं। निशांत सर का वेलकम करते हैं। कृष्णबीर सर का वेलकम है एंड विजय सर का वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। एंड जो हमारे डिग्निटरीज स्टेज पर मौजूद हैं, आई हार्टली वेलकम यू ऑल फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। कृष्णबीर चौधरी सर, वेलकम। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल हियर। And with this, ladies and gentlemen, let's move forward with lamp lightning. So I request all the dignities and guests on the dais, please. सर आप सब आए आकर के इस भगवान के आशीर्वाद के लिए सीधे आगे चलते हैं, जहाँ पे ऊपर वाले को इस जोत के साथ, इस दिए के साथ, इस दीपक के साथ, इस उजाले के साथ हम सबकी ज़िंदगी को और भी ब्राइट बनाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल, और इसी के साथ सरस्वती वंदना मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लैंप लाइटिंग के ही दौरान And now ladies and gentlemen, चलिए without any further delay आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कीनोट एड्रेस करने के लिए। आफ्टर दिस फोटो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं हमारे चेयरमैन ऑफ सोपा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर देवीश जैन सर। कम ऑन एवरीबॉडी,
सिर्फ मुझे 3 लोगों के हाथों से तालियों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। आई थिंक हम सभी ने ब्रेकफास्ट किया है, तो जोरदार तालियां हम सुना सकते हैं। कम ऑन। देवीश सर, प्लीज टेक द लीड। Namaskar and very good morning to all my friends and colleagues from SOPA and our esteemed guests joining us from around the world. I'm deeply grateful for your kind wishes, the blessings of my father Padma Shri Dr. N.N. Jain and the grace of God Almighty, which have supported me as I recover from a couple of serious health challenges. This experience truly resonates with the theme of this year's conclave, transform and turn around. A few months ago, during a hospital stay, I had the opportunity to reflect deeply. It was then that I resolved to transform myself and turn around from my ailments, embracing a new chapter with hope and determination. Today, as we gather to deliberate on strategies that will transform our soybean sector and drive a turnaround in our collective fortunes, I believe that the spirit of transformation begins with that spirit of personal change and extend to the entire industry. In line with this approach and with your kind permission, I would like to deploy technology as I deliver my chairman's keynote address. आज मैं एक 21 मिनट का वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसे मैंने सोपा के बैकग्राउंड में अपनी आवाज़ और ग्राफिक्स डेटा के साथ रिकॉर्ड किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे सकारात्मकता के साथ स्वीकार करेंगे। वीडियो चलने के दौरान यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं यहीं बैठकर आपके साथ ही एड्रेस सुनना चाहूँगा। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग and encouragement. Namaskar. May I request to please play the audio, the video. Namaskar. Good morning. Respected dignitaries, esteemed guests, colleagues from the soybean value chain, farmers, industry leaders, researchers, ladies and gentlemen, on behalf of the Soybean Processors Association of India, SOPA, I extend a warm welcome to all of you at the 8th International Soy Conclave 2025. This year's theme, Soya Industry 2025, Transform and Turn Around, is not just a slogan, it's a mission, a call to action. बहुत लंबे समय से हमारे देश का सोयाबीन क्षेत्र संभावनाओं और संघर्षों के बीच झूलता आ रहा है। क्षमता अपार है। आज हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। या तो हम पुरानी राह पर चलते रहें या साधारण परिणामों से संतुष्ट हो जाएं, या फिर हम साहसिक निर्णय लेकर अपनी उत्पादकता, अपनी नीतियों और अपने कार्य प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव लाएं। केवल तभी हम किसानों, प्रोसेसर्स और उपभोक्ताओं सभी के लिए वास्तविक टर्न अराउंड ला पाएंगे। सोपा के चेयरमैन के रूप में मेरा संकल्प हमेशा यही रहा है कि हम चुनौती को अवसर में बदलें और सोयाबीन को
भारत की खाद्य तेल सुरक्षा, प्रोटीन आत्मनिर्भरता और किसान समृद्धि का मजबूत स्तंभ बनाएं। The soybean sector in India, as you are all aware, is the livelihood of millions of farmers, a pillar of our edible oil security, and a vital source of our affordable protein for our people. SOPA has action-oriented steps to transform this sector in measurable, time-bound ways. This year marks my 12th consecutive year as SOPA chairman, in addition to 2 terms earlier in the 1990s. प्रारंभिक वर्षों में मेरा प्रयास था कि हम भारतीय सोयाबीन के लिए मजबूत और टिकाऊ निर्यात बाजार खड़ा हो, लेकिन 2014 के बाद मेरे निरंतर और अथक प्रयासों ने पटरी से उतरे इस उद्योग को दोबारा गति देने का काम किया है। मैंने किसानों, प्रोसेसर्स और उपभोक्ताओं की आवाज़ को एकजुट किया, उनके अधिकारों और हितों की वकालत की और हमारी वैध मांगों को पूरे आत्मविश्वास से नीति निर्माताओं के सामने रखा। यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं रही, यह सहमति की, यह दृढ़ता की और सबसे बढ़कर यह आशा की यात्रा रही है। Friends, the soybean is not just a crop, it's an economic driver and a nutritional savior. And above all, it is the backbone of millions of farming families who look up to this sector with hope. When we talk of India's progress towards becoming a Viksit Bharat by 2047, we cannot ignore the importance of soybean in making our farmers prosperous, reduce our import dependency, and ensuring every Indian child and adult receives adequate amount of protein. The present crisis, when we talk this year's conclave, comes at a difficult time. Reports of the large-scale damage to soybean standing crops due to excessive rains, pests, and disease infections are deep worrying. Farmers across states are anxious. Processors are uncertain. The entire value chain feels the tremors. The seed revolution foundation of transformation. मैं शुरुआत इस आधार से करना चाहता हूं जिसे मैं इस पूरे सेक्टर की नींव मानता हूं, सोयाबीन के बीज। अक्सर कहा जाता है कि किसान की फसल उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा बीज वह बोता है। यदि बीज कमजोर है तो चाहे किसान कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे खाद डाले या सिंचाई करे, अच्छी पैदावार संभव नहीं है। आज भारत की सोयाबीन उत्पादकता वैश्विक मानकों से काफ़ी पीछे है। जहां अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के किसान 3 टन प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार लेते हैं और विश्व औसत 2.6 प्रति टन हेक्टेयर है, जो मूलतः जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है। वहीं हमारा राष्ट्रीय औसत अब भी लगभग 1.1 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि नॉन जीएमओ है। किसान अब भी पुराने किस्म के बीजों का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें अनेक बार अशुद्धियां होती हैं। अनिश्चित मानसून पर निर्भरता फसलों को कभी सूखे तथा कभी अतिवृष्टि की मार झेलने पर मजबूर करती है। छोटे छोटे जोत के कारण आधुनिक मशीनों का उपयोग कठिन हो जाता है। नीतिगत अस्थिरता, बदलते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य और आयात शुल्क किसानों में असुरक्षा पैदा करते हैं। दिस गैप is not a number, it is a difference between prosperity and poverty, between dependence and self-reliance. This is not just because our farmers lack skill or effort, they are handicapped by the quality of seed material available to them. Low yields force us to import over 60% of our edible oil needs, over 16 million tons annually, costing rupees 1.7 lakh crore. This is a massive drain
on our foreign exchange resources, money that could have been invested in farmers, infrastructure, and innovation within our country. If we continue business as usual, we will not just lose ground, we will lose the confidence of our farmers, our consumers, and our markets. As SOPA chairman, my foremost mission is to change this reality. We have to pursuing with both the states and central governments, research institutions, plant breeders, and seed companies to produce high-yielding, climate-resilient soybean seed varieties that can withstand pests, diseases, drought, or erratic rainfall while still delivering higher productivity. But developing these seeds is only the first step. What is equally important is multiplying these seeds on a large scale and making them accessible and available to every soybean farmers across India. Just imagine if our average productivity rises even by 500 kilograms per hectare, India can save billions of rupees in edible oil imports and adding to the protein needs while putting more money in the hands of our farmers. This is the seed revolution we need. Cutting import dependency. दोस्तों, वर्तमान में भारत की खाद्य तेल की लगभग 60% आवश्यकता आयात करता है और इसके लिए हर साल 1,70,000 करोड़ रुपए की से अधिक की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इस भारी आयात निर्भरता से हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, हमारे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ता है और हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। अगर हम किसी बुनियादी वस्तु जैसे खाद्य तेल के लिए विदेशों पर निर्भर रहते हैं तो हम वास्तव में आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं बन सकते। सोयाबीन हमें इस समीकरण को बदलने का सुनहरा अवसर देता है। उपज बढ़ाकर, बेहतर बीज उपलब्ध कराकर और किसानों को तकनीक तथा उचित मूल्य के साथ समर्थन देकर हम इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। We can substantially reduce our edible oil import bill. This is not just about economics. It is about a national pride and a national nutritional security. When we say Atmanirbhar Bharat, it must also mean Atmanirbhar in oilseeds and proteins. Soya foods, the protein of the future. Soybean, besides being a major ingredient of our kitchen, provides us with essential edible oils and are a powerhouse of protein. However, its inadequate availability has not only plagued the health of our nation, but also made our countrymen susceptible to various diseases due to lack of required nutrition. Soybean has about 40% protein and 20% oil. That's the reason it is known as Wonder Bean. It has the power to bridge India's twin challenge of protein deficiency and oil import dependence. Yet 2/3 of our rural households do not get enough protein. 35% of our children are stunted and over half of the women are anemic. Friends, India is a country where protein deficiency is alarming high. Studies show that more than 60% of our population consumes less protein than required for a human life on a daily basis. This silent deficiency leads to poor growth in children, lower productivity in adults, and greater vulnerability to diseases. ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अभी हाल ही में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार भारतीय खाने में अधिकांश लोग अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एवं कम प्रोटीन ले रहे हैं। इससे डायबिटीज, प्री डायबिटीज और मोटापे का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्च के अनुसार भारतीय लोगों के भोजन में 62% भाग कार्बोहाइड्रेट होता है। यदि लोग अधिक कार्बोहाइड्रेट की जगह प्लांट या डेयरी प्रोटीन लें तो मेटाबॉलिक रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यदि सोया प्रोटीन युक्त भोजन लोग अपनी डेली डाइट में शामिल करें
तो इस खतरों से काफी हद तक बचा जा सकता है. So the bottom line is that soybeans can play the role of a nutritional savior. Soya-based foods, soya flour, soya milk, soya tofu, textured soya protein are the cheapest, most sustainable and easily scalable sources of protein. Unlike animal protein, soya protein is environmentally sustainable, requires far less land and water, and is free from cholesterol. 60 रुपए प्रति किलो की दर से सोया प्रोटीन दालों की तुलना में 3 गुना सस्ता है. यदि हम सोया को रोटी, स्कूल के भोजन, आंगनवाड़ी आहार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के में राशन में शामिल कर सकें तो हम व्यापक स्तर पर छिपे हुए कुपोषण से लड़ सकते हैं. कल्पना कीजिए हर भारतीय परिवार को सोया फोर्टिफाइड आटा उपलब्ध हो तो यह रसोई के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा देने जैसा होगा. इसी दृष्टिकोण के साथ मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि 2026 को सोयाबीन वर्ष घोषित किया जाए, जैसे 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया था. आइए सोयाबीन को शक्ति के अन्न के रूप में प्रस्तुत करें. With initiatives like protein fortified Bharat Atta, we can take soya protein to every household. This is not only possible, it is necessary for our nation's health. As SOPA chairman, one of my visions is to popularize soya foods in every Indian household. We must work with the government to fortify midday meals in schools with soya protein so that our children grow strong and healthy. We must encourage the food industry to innovate soya-based snacks and ready-to-eat products so that the families can easily adopt them. We must run awareness campaigns to break myths about soya consumption and highlight its health benefits. And most importantly, we must ensure that every Indian thali, every plate of food contains soya in one or the other form. Only then can we say that we have truly addressed India's protein challenge. Now, talking about the GMO debate, friends, the import of GM seeds is another area of concern for us. There is a pressure from the international lobbies, particularly from the United States, to accept surplus GM soybeans and BT corn. India's law currently prohibits GM food crops. We must not allow our food security to depend on imported patented seeds. If GM technology has to be developed and adopted, it must be done indigenously by our own scientists, tested by on Indian soils and validated by Indian farmers. Only then can it be considered. Encouragingly, research from our universities show that new non-GM Indian soybean varieties can double yields to 2 tons per hectare. This must be our priority, self-reliance through innovation at home. Now, important is to talk about soy meal and the feed industry. Let me now turn to the feed industry. Soybean meal is the gold standard of protein for poultry, aquaculture, and livestock. Its high essential amino acids composition ensure growth, weight gain, and productivity. Yet, in recent years, cheaper alternatives like DDGS have begun to replace soybean meal. This may reduce costs in the short term, but it comes at a heavy price. Lower productivity, nutritional imbalances, and high risk of aflatoxin contamination. For a country with rupees 1.2 lakh crore poultry industry and rapidly growing aquaculture, this compromise is dangerous. The message must be clear. Soybean meal is irreplaceable for health and safe animal protein production.
Now, coming to the measurable actions, ladies and gentlemen, I firmly believe that vision without action are just dreams. That is why my approach as SOPA chairman is to define clear, measurable and time-bound goals for the soybean sector. अगले 5 वर्षों में सोयाबीन की उत्पादकता को बढ़ाकर 1.1 टन पर हेक्टेयर से कम 2 टन पर हेक्टेयर करना, अगले 3 वर्षों में उच्च उपज देने वाली सोयाबीन बीज की किस्मों को कम से कम 70% किसानों तक पहुंचाना, सोयाबीन की उपज को और प्रसंस्करण क्षमता में सुधार के माध्यम से खाद्य तेल आयात निर्भरता को 25% तक कम करना, 2030 तक प्रोटीन फोर्टिफिकेशन, जागरूकता और उत्पाद नवाचार के माध्यम से सोयाबीन भारत के खाद्य पदार्थों में सेवन को दुगना करना, आगामी दशक में भारत में प्रोटीन की कमी को आधा करना, जिसमें सोया की प्रमुख भूमिका होगी। सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थान और किसान मिलकर मिशन मोड में काम करने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। But let me be clear, this cannot be the mission of SOPA alone. This must be a national movement. To the farmers, I say, adopt new seed varieties, embrace modern practices, and trust that soya industry stands with you. To the researchers, I say, focus your science on practical, farmer-friendly innovations and help us bridge the soybean productivity gap. To the industry leaders, I say, invest in soybean processing, modernization, in soya food product development, and in consumer awareness. To the government, I say, support us with policy incentives and soybean fortification programs that make soybean a household staple. Together we can make India not just a soybean growing country, but a soybean power, a nation that feeds its people with sufficient oil, sufficient protein, and sufficient pride. Friends, as we look ahead, let me remind ourselves of this conclave powerful theme, Soy Industry 2025, transform and turn around. Transform by sowing better seeds, embrace technology, and securing higher soybean yields for our farmers. Turn around by reducing our crippling dependence on imports, popularizing soya foods, and ensuring every Indian family has access to affordable soy protein. The path will not be easy, but it is not impossible either. With determination, innovation, and collective efforts, we can turn this vision into reality. I dream of an India where soybean farmers harvest prosperity, where our kitchens are enriched with soy protein, and where our nation stands tall as self-reliant in edible oils and balanced nutrition. Together, we sow the seeds of transformation. Let us together lead the turnaround of Indian soya industry so that by 2047, when we celebrate a century of independence, India can proudly say we are not only self-sufficient, but also a global leader in soya sector. Thank you, friends. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। चेयरमैन सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि visions without actions are just dreams, and we couldn't be more agree with that. Can we have a huge round of applause for our chairman sir? And with this, ladies and gentlemen, let's move forward with our another
expert, special guest Dr. Shatadru Chattopadhyay sir. जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर सोलिडारिटी एशिया नेटवर्क. Thank you. The chair, Mr. Devesh Jain, members of SOPA, leaders of the industry and from the government and fellow practitioners of sustainability. बहुत धन्यवाद, Jain Sahab. After your speech, there is not much to speak. I mean, everything is covered. It's kind of covers the comprehensively the issues of soybean. But let me start by saying, what am I doing here? We are not from the industry. We are Solidaridad. We have been working for last 58 years purely on agricultural sustainability in 55 countries. We are here because we believe soybean farmers, who are our stakeholders, require support. And we are here because we believe under SOPA, we can provide affordable and sustainable nutrition to our country. And that is what unites us, because it's the vision and the goal. I would not go into fundamental issues that has been discussed by the chairman, but I feel, we can look into the solutions. I think we need to really, we know the problems. I mean, more than us, you know the problems. You are part of the industry. I think the question would be what can be done? And I'm here to talk about that. So essentially, if we are looking at the problems, we talk about low productivity, climate change. We are talking about issues around, higher cost of production. These kind of issues are prevalent in the production side. But also on the policy side, there is very little happening on the policy side from the government for the soybean, and very little effort we have made as a soybean sector, as an industry, on a scientific basis, campaigns of what exactly we need from the government, what policy changes are required from the government. And lastly, I think there is a issue about demand. There's been so much focused on the oil, but on the soya food, it's very little effort has been put into increased demand. As a child, I never knew about soybean as a food, and I'm pretty sure there are many people. Now it is increasing, but the rate is very slow even today. And lastly, it's a very dangerous situation. We know that the US government has been trying very hard to push soybean into India, and there is a lot of soybean coming in, soya oil coming in. So, I mean, I was very happy to see the response from Mr. Jain about there has to be some sort of balance between the import which is coming in and the interest of our producers here. So, what can we do about it? I think on the production side, Solidaridad runs the world's biggest regenerative agriculture framework, which is operational, which is headquartered in London, and it is spread across 50 countries. Regenerative agriculture हम लोग करके देखे, उसमें जो आपका विजन है जैन साहब 1.1 से 2 टन तक ले जाने का, वो हो सकता है, वो संभव है. हमारे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में ये देख पाए हैं, हमने कई सारे कंट्रीज़ में देखे हैं. 2 टन होना संभव खाली नहीं है, उसके साथ साथ पानी का भी ज़रूरत कम पड़ता है उसमें, और क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी तैयारी, उसको काफ़ी अच्छी तरह से फेस करने की क्षमता बढ़ता है. खाली वही नहीं, ये डीकार्बोनाइज भी करता है और यूडीआर के साथ कंप्लायंस भी करता है, क्योंकि यूडीआर इज बिकमिंग अ मेजर इशू फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस. So this is one of the things which we would like to see in the production side. On the policy side, there are a lot of things which can happen, and I think we have not done it yet properly. One of the thing is, हम लोग इंडोनेशिया से पाम ऑयल लेते हैं भर के, 5 मिलियन टन के आसपास इंडोनेशिया से तेल आता है. हम उनको सोयाबीन नहीं बेचते हैं. ये एक काम हो सकता है. We should talk to the government, I mean, that how can we align? If we are taking so much of oil from palm oil from Indonesia, why don't we sell our soybean to them?
particularly when export markets are getting very difficult and we have to look for markets closer home. Secondly, I think, public nutrition and procurement की बात करी गई यहाँ पे, तो पीएम पोषण के स्कीम के अंदर अगर हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा सके तो बहुत अच्छा होगा. आंगनवाड़ीज़ में, आर्म फोर्सेस में सोयाबीन की ज़रूरत पड़ती है, तो हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड, दैट वुड बी ए वेरी हेल्पफुल थिंग. और इसके अलावा जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसके ऊपर अगर रेगुलर कुछ फीडबैक रहे तो ठीक रहेगा. और इसका तीसरा जो कंपोनेंट है वो डिमांड साइड, उसके ऊपर बहुत कम काम होते हैं. वी डोंट पुट लॉट ऑफ एफर्ट ऑन डिमांड. डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है एक प्री कॉम्पिटिटिव तरीके से. चाय में हम लोग इंडियन टी एसोसिएशन के साथ बहुत अच्छा काम किए हैं, इसके ऊपर टी बोर्ड के साथ मिलके चाय पियो मस्ट जियो वाला कैंपेन, जो कि एक प्री कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोगों ने काम किया और उसमें चाय का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ा क्योंकि उनका कंपटीशन रहता था कॉफ़ी के साथ. उसी तरह से सोयाबीन इंडस्ट्री अगर साथ में होकर एक प्री कॉम्पिटिटिव लेवल में कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए काम करे तो बहुत अच्छा हो सकता है. इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मैं बात कर रहा था यहाँ पे मध्य प्रदेश में सांची है, बहुत सारे सांची में दूध मिलता है, पनीर मिलता है, लेकिन वहाँ पे टोफू या सोया मिल्क नहीं मिलता है. इसमें क्या हानि है कि अगर हम लोग ये गवर्नमेंट के साथ मिलके मध्य प्रदेश में ही इन सांचियों के शॉप्स में एक सोयाबीन का भी पोर्टफोलियो बनाए और उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सके. क्योंकि जब तक मैं नहीं खरीदूंगा दुकान से तब तक वो कंजम्पशन, वो that mindset will not develop. I can hear many nutritionists talking in the television about the benefits of soy. But at the end of the day, when I'm going for my grocery shopping, it should be made available to me as a day-to-day food. And that is something which we would like to do. I think this is very much aligned with what Mr. Jain was talking about, Dr. Jain was talking about reducing protein deficiency by 50% of the country. Now, I don't want to talk only about what needs to be done. My suggestion here, and this is an open offer to the industry, from Solidaridad, I propose that you, under SOPA, set up a soybean sustainability fund. Whatever the industry starts, I'm announcing here that I will love to put 1 crore to start that fund. This is the minimum amount I can put in, but any amount you would like to put in, I will match it. Any amount the soybean industry puts in to promote these 3 factors, Solidaridad is happy to match it. So, because there's a lot of talk, but we need a 180 days action plan. So let's create. So are you willing to match? Because if we start with 1 crore, I request the industry to come up with a 2 crore and deposit to SOPA. And together, you start this program so that it is beneficial for people, it is beneficial for farmers, it is beneficial for our citizens, because nutrition deficiency का economic impact बहुत ज़्यादा होता है, वो विकसित भारत के रोड में बहुत बड़ा बाधा बनेगा अगर हम लोग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को हासिल नहीं कर सके. तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे हम लोग इसमें काम कर सकेंगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स हम सभी को मिल जाते हैं, लेकिन हमें सोयाबीन प्रोडक्ट्स की तरफ और उसका कंजप्शन बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए. ऑलराइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स वेलकम विथ योर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आवर गेस्ट ऑफ ऑनर, लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर कृष्णबीर चौधरी सर, रिनोन फार्मर लीडर एंड member high power committee on MSP Ministry of Agriculture. जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करेंगे. कृष्णबीर चौधरी सर. आज के सोया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि CACP के चेयरमैन मेरे मित्र विजय पॉल शर्मा जी, सोपा के चेयरमैन देवेश जैन जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक जी, नरेश गोयनका जी, डॉक्टर शताद्रु चट्टोपाध्याय जी, सम्मानित मित्रों,
जो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि सोपा प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बहुत कामयाबी के साथ और मुद्दों के साथ बात करते हैं। राष्ट्र को जो आवश्यकता है, किसान को जो आवश्यकता है, उद्योगों को जो आवश्यकता है, उन सब मुद्दों पर कल से बातचीत चल रही है। मैंने भी काफ़ी वक्ताओं को सुना है, उनके विचारों को जाना है और ख़ास तौर से जो युवा जनरेशन के 3 युवाओं ने कल अपने मुद्दों पर बात की, वो बहुत ही असरदायक और आवश्यक है। मैं इससे सहमत हूँ। कल की बातों में जो 3 युवाओं ने, पाठक जी आपके साथ जो बैठ के आपने चर्चा कराई थी, तो वो बड़ी सराहनीय चर्चा थी। मित्रों, बात है देश के किसानों की, देश के उद्योग जगत की और उपभोक्ताओं की। ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्टिविटी की, किसानों की। प्रोडक्टिविटी कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि दुनिया के दूसरे विकसित देशों में जो प्रोडक्टिविटी है, उसके मुकाबले जब हम यूएस और ब्राज़ील की बात करते हैं, अर्जेंटीना की बात करते हैं, तो भारत की प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहले बीज की आवश्यकता है। अब जो बीज उपलब्ध है, किसान उसका प्रयोग कर रहा है, फसल पैदा कर रहा है। इसमें मेरा सुझाव ये है कि बीजों की वैरायटी, उसको जो क्वालिटी और जो वैरायटी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान को आवश्यकता है, इंडस्ट्री को उसके साथ मिल के काम करना पड़ेगा। आलू के चिप्स बनाने वाली कंपनी, आलू की कौन से बीज की पैदावार करनी है, वो कंपनी कांटेक्ट करके जॉइंटली काम करते हैं और उत्पादन करवाते हैं और उसको पूरे देश में उपभोक्ता को मुहैया करते हैं। मेरा सुझाव है कंपनी के मित्रों से कि आप बीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करिए। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब बीज बढ़ेगा, बीज की क्वालिटी सुधरेगी। और इसके तो बीज में दिक्कत क्या है कि जरा भी नमी होती है तो वो खराब हो जाता है। बीज के लोडिंग अनलोडिंग में अगर कट्टा जो बोरी जो है उसके ऊपर जोर से रख दिया जाए, वजन ज़्यादा पड़ जाए, तब भी बीज खराब हो जाता है। बहुत नाजुक है इसका जो सीड का ट्रांसपोर्टेशन का काम है। थोड़ी सी नमी है तब उसकी दिक्कत हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी की छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको इसमें R&D में काम करना पड़ेगा। R&D में आप काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उद्योग भी फलेंगे फूलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है सॉइल की। उर्वरक क्षमता सॉइल पर भी निर्भर होता है। क्या डेफिशिएंसी है मिट्टी के अंदर, उसकी जानकारी किसानों को होनी जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो भी उत्पादकता पर असर डालती है। उसकी भी जानकारी पूरी तरीके से हर फील्ड की जो है हर किसान को हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पानी ज़्यादा हो गया तो फसल को नुकसान हो गया। हर चीज़ से नाजुक है और किसान असहाय बेसहारा खड़ा रहता है जब उसको उसकी फसल में नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है नुकसान को। मुझे पूरा देश से लोग कहते हैं कि साहब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को नहीं मिल पा रहा सोयाबीन का, तो ये हो क्या रहा है बाजार के अंदर। ये डिमांड एंड सप्लाई है, हम जानते हैं इस चीज को। प्रोटीन की जितनी डिमांड बढ़ेगी, सोया ऑयल की जितनी डिमांड बढ़ेगी, जितनी सोया मिल्क केक का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना किसान को फायदा मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री के पास पैसा होता है तो वो जरूर खरीदते हैं, भुगतान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के अंदर भारत के सोया मिल्क केक की डिमांड यूरोप में सबसे ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि आपका नॉन जीएम सोयाबीन की मिल्क केक है।
यूएस की हालत देखिए, जीएम सोयाबीन की क्या दुर्गति आज हो रही है, और उसके लिए इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है, मैं तो धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस देश के किसानों को बचाने के लिए, सोयाबीन पैदा करने वाले करोड़ों किसानों के लिए जो निर्णय उन्होंने लिया है, वो देश के सोयाबीन किसानों के लिए, देश के सोया मिल उद्योग के लिए, इस सब पर बहुत ही ज़्यादा कठोर निर्णय था, कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित में निर्णय लिया। इसी तरीके से जीएम मेज के किसानों को बचाने के लिए कहा कि नहीं, हम अपने देश के किसानों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, देश की खाद्यान्न सुरक्षा मेरे लिए सबसे पहले है। तो जब प्रधानमंत्री जी का निर्णय इतना राष्ट्र हित में है और आपके लिए है, मैं आपको भी कह रहा हूं कि ये आपके भी हित में है। ये सबसे बड़ा बाजार तो, अब मेरा इसमें सुझाव ये है कि मिल केक जो है वो तो अलग सप्लाई है, तेल की बात अलग है। आप कुछ नए प्रोडक्ट इनोवेट करिए, टेस्ट डेवलप करिए। देवेश जैन जी, आप बराबर कहते हैं कि प्रोटीन सस्ता है, बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन सस्ता है, तेल सस्ता है। देश में बड़े पैमाने 65% करीब जो है तेल का आयात करना पड़ता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन जो उपभोक्ता को टेस्ट डेवलप करना, प्रोटीन बिस्किट आप डेवलप करिए, मेरा सुझाव है। और उसको जितना प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो पूरे देश में है, बच्चों में है, महिलाओं में है। मिलेट्स को देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से मिलेट को प्रमोट किया और आज पूरी दुनिया के अंदर मिलेट्स डे मनाया जाता है। ये ताकत है आपके नेतृत्व की, ये होता है लीडरशिप दुनिया के अंदर। और आज पूरी दुनिया उस मिलेट के टेस्ट को जो है, सबसे आगे बढ़कर मिलेट्स का प्रयोग बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ भारत के अंदर उन लोगों ने, बाहर के लोगों ने आके पिज्जा, बर्गर, ये सब अपना जो है बाजार खड़ा कर लिया। आपको बाजार में खड़े होना है, आपको वो उत्पाद तैयार करने हैं, उसको स्वाद को सुधारना है। सबसे बड़ी बात यह कि सोयाबीन के प्रोटीन के स्वाद को जब आप सुधार लेंगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है कंज्यूमर में बढ़ जाएगी। और यही एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, इस पर आपको R&D पर काम करना है, मेरा तो सुझाव ये है। और जितना आप इस पर काम करेंगे, स्वाद सुधारेंगे, उतना बाजार में जाएगा। और दूध की भी बात ये है, मैं तो आपको 35 साल पहले की बात कर रहा हूं, 40 साल पहले डॉक्टर कोठारी नागपुर में होते थे, और मैं जब भी नागपुर गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सोया मिल्क बनाया है, आप इसको देखिए, सोया कर्ड बना रहा हूं, इसको देखिए। मैंने उनको तब भी कहा था कि स्वाद में सुधार करिए, उपभोक्ता के जो जीभ से स्वाद है वो मिल्क प्रोडक्ट का लगा हुआ है, वो पल्सेस के प्रोडक्ट से आप compete नहीं कर सकते। इसका प्रोडक्ट आपको, प्रोटीन प्रोडक्ट आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और आप देखिए ना, प्रोटीन के बिस्किट जो है, मेडिकल साइंस जो है प्रेस्क्राइब, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, मेडिकल साइंस में इसको प्रमोट करिए। और वो तभी होगा जब उसका टेस्ट एक्सेप्टेबल होगा। ये मेरा एक सुझाव इसमें है आपसे। और क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। वैल्यू एडिशन, मैंने कल देखा है कुछ कंपनियां जो वैल्यू एडिशन में काम कर रही हैं और वो बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैल्यू एडिशन आज समय की आवश्यकता है। बाजार वैल्यू एडिशन से चल रहा है। जितना वैल्यू एडिशन करेंगे, जितना R&D पर काम करेंगे, लकीर के फकीर बने रहने से काम नहीं चलने वाला। हमारी जो डिमांड है, जो उपभोक्ता की मांग है, हमें उसको पूरी करना है। और जब उसको पूरी करेंगे तो उत्पादों की मांग बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आज इस देश में खाद्य तेलों का आयात होता है। खाद्य तेलों की उस पूर्ति को करने के लिए सोयाबीन ऑयल जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। भविष्य है और उज्जवल भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के नीति निर्धारण करने वाले मित्रों से भी
मैं आग्रह समय समय पर करता रहा हूं और आज फिर इस मंच के माध्यम से करता हूं कि जो आयात का ये जो खेल है और जो ड्यूटी को राइट ऑफ करने की बात है, इससे देश के किसानों को नुकसान होता है, सीधा सीधा नुकसान किसानों को होता है। तो हमें ड्यूटी जो है सतर्कता के साथ उतनी मेंटेन करनी होगी जिससे देश के जो बाजार है, देश का जो प्राइस है, उस पर कोई असर ना पड़े। अगर हम ड्यूटी पोल्ट्री और एनिमल साइड के लिए जो है कर देंगे तो वो एक शॉर्ट टर्म डिमांड है। उस शॉर्ट टर्म डिमांड के लिए ड्यूटी कम करने की आवश्यकता नहीं है इंपोर्ट पर, ड्यूटी को सतर्कता के साथ मेंटेन करने की आवश्यकता है। अगर हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं और देश की खाद्यान्न सुरक्षा चाहते हैं तो हमको ड्यूटी के मुद्दे पर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और तभी हम बचा पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं आयात में। आप देखिए ना, हर देश अपने बाजार को बचाने पे लगा हुआ है, तो भारत क्यों नहीं? भारत को भी बचाने के लिए, बाजार को बचाने के लिए अपने आयात शुल्क को जो है बराबर जो है मेंटेन करना पड़ेगा। तभी हम आत्मनिर्भर भारत जो है 2047 का सपना जो है तभी हम पूरा कर पाएंगे। इंडस्ट्री से मेरा एक निवेदन है कि आप किसानों के साथ, देखिए छोटी छोटी जोत के किसान हैं, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आइए। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ाएंगे उतना आपका भी हित होगा, उतना क्वालिटी भी अच्छी होगी, उतनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया होगी, वैल्यू एडिशन जो है प्रोडक्ट्स का वो ज़्यादा उतना इफेक्टिव होगा और टेस्ट में भी उससे सुधार होगा जब वैरायटी हम वो करेंगे जिससे टेस्ट डेवलप होगा। तो जो आपका CSR फंड है, मेरा सुझाव है उसको आप R&D पे करिए और सोपा जैसा संगठन जो मजबूती के साथ आगे काम कर रहा है बढ़कर, और देवेश जैन जी आप कोशिश तो पूरी करने में लगे, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। मेरा सुझाव ये है कि जैसे आप पहले मेले लगाते थे, किसानों के बीच में सोपा मेले लगाता था और एक्सटेंशन का प्रोग्राम करवाते थे, उसको दोबारा से शुरू करिए। उद्योगों के लोगों से मेरा आग्रह है, सभी मित्रों से, कि आप सोपा को और सहयोग करिए एक्सटेंशन के कार्य के लिए। जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही सोपा किसानों के साथ ज़्यादा कार्य करने में कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी किया है और अब फिर इसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक्सटेंशन का वर्क जो है स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि मशीनरी जो है हमारे सब स्टेट्स की वो लगभग डिफंक्ट हो गई है। और जब एक्सटेंशन का वर्क नहीं है तो सब आपको आना पड़ेगा आगे, और आज आपके पास फंड्स हैं उस काम के लिए। जितना रिसर्च करेंगे उतना ही डेवलपमेंट होगा। तो मेरा सब मित्रों से ये भी आग्रह है कि सोपा को और मजबूत करिए और टेस्ट डेवलप करिए। फिर मेरा अंतिम शब्द है कि उत्पादों का टेस्ट डेवलप करिए, उनके लिए बाजार खड़ा करिए। दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जितने भी हैं, उनके बाजार की स्थिति आपको मालूम है। प्रोडक्ट बाद में बनता है, मार्केट में बाद में आता है, पहले उसको इतना बाजार में एडवर्टाइज कर देते हैं, इतना उसका टेस्ट डेवलप कर देते हैं कि उसके लिए ग्राहक 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 हर जगह खड़ा होता है सड़क पर और ढूंढता है कि ये उत्पाद कहाँ है। उस बाजार को देखिए, उस बाजार के टेस्ट को अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश करिए। आप आगे बढ़ेंगे, कामयाबी मिलेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। इटली के प्रोडक्ट यहां बिकते हैं, उनका स्वाद यहां के नौजवान बच्चों को पसंद है, तो आप भी ऐसे ही टेस्ट डेवलप करते हुए ऐसे उत्पादों को बनाइए। तरह तरह का है। मैंने एक बार आंध्र प्रदेश का, विजयपाल जी, एक दिन आंध्र प्रदेश में काफी पहले मैं गया था, तो बाजरा उस समय तक ज्यादा पॉपुलर यहां नहीं था। राजस्थान में भी कम हो गया, हरियाणा में भी कम हो गया खपत। तो आंध्रा में मैं गया तो मैंने एक जगह मुझे ले जाया गया है रेनफेड एरिया में कि साहब देखिए पूरा बाजरा की खेती कर रहे। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, वन मैन शो था। मैंने देखा वो करीब 500 एकड़ के एरिया में, रेनफेड एरिया में, एक गांव में, वो सब देखा। उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट पे लेके गए
और उस रेस्टोरेंट के अंदर बाजरे की खिचड़ी से लेके, बाजरे की बर्फी से लेके, और बाजरे का ड्राई पाउडर से लेके, बाजरे का चूर्ण से लेके, और उन्होंने कम से कम जो है 20 उत्पाद बाजरे के मेरे सामने रखे, और उन्होंने यही कहा जो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर हमने हर उत्पाद में टेस्ट डेवलप कर दिया, टेस्ट डेवलप किया, क्योंकि बाजरे में भी कसेलापन होता था। मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया बाजरे का। तो अब आप बताइए, 5 स्टार होटल में आज बाजरे की चपाती मांगते हैं लोग, आज गुड़ मांगते हैं लोग। मैंने 91-92 में इंडियन शुगर केन डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में कहा था कि गुड़ को क्यूब के फॉर्म में करेंगे तो बाजार मिलेगा। आज गुड़ का क्यूब के फॉर्म में बनाया जा रहा है तो बाजार मिल रहा है। तो आपसे इसी आग्रह के साथ कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के साथ बढ़िए, उसमें आप भी सुरक्षित रहेंगे, किसान भी सुरक्षित रहेगा, और ये जो एमएसपी का समाधान है ये भी हो जाएगा, और आपको क्वालिटी का उत्पाद मिलेगा। आपको इसलिए मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आगे आइए। मिसगाइड करना बहुत आसान है, मिसगाइड करना बहुत आसान है, और सही रास्ते पे चलना कठिन होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। मैंने आपको पोटैटो चिप्स की एग्जाम्पल दी है, और वो वैरायटी उन्होंने देश के किसानों से जगह जगह, पंजाब से लेकर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश तक जो है, मेरठ तक, जगह जगह उन्होंने जो वैरायटी को दिया है। तो आप सीड की वैरायटी पर काम करिए, मिलके काम करेंगे, बहुत अच्छा परिणाम होगा, आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ बाजार के साथ और किसान के साथ मिलके होगी। आप सब कामयाबी के साथ आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और देश के किसान को अपने साथ मिलकर और कंधे से कंधा मिलाकर, और उसको सहयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का सहयोग करते हुए, सीड टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी समय समय पर उसको मार्गदर्शन करते हुए कि फसल को किस तरीके से उसको पूरा हार्वेस्टिंग तक जो है, और हार्वेस्टिंग के बाद भी किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सब आप सहयोग करेंगे, मिलके करेंगे, जरूर परिणाम मिलेगा। आंगनबाड़ी नहीं, इस देश का बाजार आपको मिलेगा। ये मैं आपको, मेरा अपना अनुभव कहता है कि सिर्फ हमें सरकार की योजनाओं पर ही निर्भर नहीं रहना। सरकार प्रयास कर चुकी, देवेश जी, सरकार ने सोयाबीन का आटा और सोयाबीन की बड़ी बनवाकर बच्चों को आंगनवाड़ी के कार्यक्रम में डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का काम किया है। लेकिन वो शिकायत वहाँ से यही आई स्कूलों से बच्चों की कि साहब इसका स्वाद अच्छा नहीं है। स्वाद की बात है, और स्वाद डेवलप करना, अरे बताइए, सिंथेटिक जूस बनाया जा सकता है संतरे के नाम पर, अनानास के नाम पर, आम के नाम पर, सब कुछ सिंथेटिक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि रियल है। ये उत्पाद देख लीजिए, तो वो सिंथेटिक से बना रहे हैं, आप तो जेन्युइन प्रोडक्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो टेस्ट डेवलप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ काम करने की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, और उसी रास्ते पर बढ़ेंगे। एक बार पुनः सोपा का धन्यवाद, और आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और इस दावे के साथ कि देश की लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से दुनिया में ताकत के साथ और सम्मान के साथ आज भारत का सम्मान है, आप उसमें भागीदार बने, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। धन्यवाद कश्मीर जी। एक घोषणा मैं अभी कर दूं। आपने कहा कि सोपा को किसानों के साथ जुड़ना चाहिए। हम ट्रेनिंग वगैरह सब कर रहे थे, लेकिन आज ही हमने शताद्रु जी के साथ मिलके एक किसान सेल सोपा में बनाने का फैसला किया है, जिसमें हम किसानों को साथ में जोड़ेंगे, उनके साथ जितना काम कर रहे हैं उससे 6 गुना ज़्यादा काम करेंगे। तो आपके सेशन बहुत अच्छे सर, और वो करेंगे, हम जरूर करेंगे। थैंक यू। वेरी अमेजिंग सर। और मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारा किसानों को सही डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसानों से ही सोयाबीन आता है, और अगर उसमें टेस्ट अगर हम डेवलप कर लेंगे तो वाकई हमारी उत्पादकता जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। एंड दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा सर के लिए, चेयरमैन कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तालियों की आवाज़ें मुझे नहीं आई हैं, तो मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगी। Good morning, ladies and gentlemen. It's a great honor and privilege for me to be here and participate in this event. So let me first compliment SOPA team and its leadership, particularly Dr. Jain, Dr. Pathak, Mr. Goenka, Matlani, and others for taking this initiative and organize this important event. And the theme of this International Conclave is very, very important. They are talking about two things. One is transform, and second is the turn around the industry. And I think when you are talking about transformation or the turnaround of any industry, there could be two important routes. One could be, demand-driven phenomena, or second could be the supply push, and third could be a combination of both the demand-driven and supply push. And if we look at our own experience in the last, let's say, 2.5 decades, I think we have experienced all these three, important drivers. So first, if I look at our cotton sector, in 2002, the government permitted, BT cotton. And you can see that after introduction of this BT cotton in 2002, our cotton production increased manifold. And that happened primarily because of two reasons. One is because our cost got reduced. Second is there was a significant improvement in our productivity. And that triggered the growth in the cotton sector, and we became net exporters of cotton from being net importers of cotton. So I'll give you, small, numbers in terms of what happened between 2002 and 2013. That's the first phase of introduction of BT cotton. So there was almost a 60% increase in area under cotton from around 7.5 million hectares to more than 12 million hectares. Our productivity increased by almost 2.5 times from less than 200 kg per hectare to around 500 kg per hectare. And that translated into, almost 4 times increase in our production from about 8 to 9 million bales to around 35 million bales. So that's the success story of our BT cotton from after 2002 and up to 2013. But we must keep in mind that the technology is an evolving process, and the shelf life of most of the technologies is becoming shorter. So what happened to cotton sector between 2013 and 2024? Look at the numbers in terms of your production, in terms of productivity. In fact, there's a decline in our production, there's a decline in productivity, and there's also a marginal decline in area because we became less competitive, because our cost went up, our productivity went down, and today we are becoming net importers of cotton. So the point which I want to make here is that technology is the continuous process, and we keep on investing heavily in research and development. So that was the success story, which was supply-driven. And the second important, area which we can see that it's a demand pull kind of, a growth in a sector. And a very recent case is your corn sector, maize. And today maize is replacing almost all crops, whether it's pulses, oil seeds, and even in certain cases you would find that corn is, replacing your wheat crop also. And that happened primarily because of the demand generation from the ethanol industry. And even in the last, 4-5 years, if we see the growth in terms of our production went up from about 32 million tons to 42 million tons. So we added almost 10 million tons of corn in the last 5 years. And that happened primarily, if you look at the drivers, it was mainly driven by expansion in area, because technology, you can't generate technology overnight, so it requires time. But the point is that corn is going to be a major revolution in our economy, primarily because of increased demand, not from poultry and feed sector, feed and starch sector, but ethanol. So the point which Mr. Chaudhary was mentioning was basically to generate demand.
And the third set is where you would find a combination of technology that's a supply push and the demand pull, and that happened in case of sugarcane. I remember in 2017-18, around that time, our sugarcane farmers were facing a huge crisis because we were primarily producing sugar from sugarcane, and the sugar prices, both the domestic prices and international prices, were depressed. So the sugar mills were not able to pay to the farmers, so there was a huge problem of cane price arrears. And that became economic issue, that became social issue, that became political issue. And again, there was a very strong, I would say, commitment on the policy front, because we realized that our sugar consumption is stagnating. So if we produce more, that's going to have impact on the, there's a mismatch between demand and supply. So we need to find out alternative routes for excess sugarcane production. And again, the government took very bold decision where the government allowed diversion of sugarcane juice and other byproducts for ethanol production. And you can see after that there's a very significant increase in our sugarcane area, sugarcane production. And that was also supported by a new variety which changed the whole landscape of sugarcane, particularly in the northern region, Uttar Pradesh, where productivity increased by almost 60%. There was a huge expansion in area. So that was the kind of, the combination of both the demand pull and supply push phenomena. So we have done, great in terms of our performance in agriculture sector. If you look at last 10 years, we have setting records every year. If I look at the, let's say, food grain production, so in the last 10 years, we have added more than 100 million tons of food grain production from 250 million tons to around 350, 354 million tons in 24-25. Similarly, we have also, made significant progress in our oilseed production from about 30, 31 million tons to around 42, 43 million tons in the recent years. So there's a net addition of about 11 million tons in the last 10 years. But that growth is primarily driven by, our increased production of rapeseed and mustard, and very marginal contribution from soybean. So the issue is why we should focus on Atmanirbharta or self-sufficiency, which Honorable Prime Minister is talking about. And I think his focus is on two important areas. One is Atmanirbharta in pulses, and the second is Atmanirbharta in edible oils. And there are 2 or 3 basic reasons. One is for a country like us with 1.4 billion people, high import dependency is also a little tricky issue, because the global markets, particularly the agriculture commodity markets, are unpredictable, they are volatile. So too much dependence on imports is neither desirable nor feasible. And you must have seen that, which Dr. Jain was also mentioning, that our import dependency is to the extent of about 55 to 60%. So that's the reason that we must achieve self-sufficiency. I'm not talking about 100%. We must have fairly, high level of self-sufficiency in edible oils. And the second important, the problem or dynamics of your global vegetable oil is they are highly volatile. It has nothing to do with the demand supply. There are other factors which influence your global, prices. And again, when you look at, even the soybean oil prices, they could be as low as less than $700 per metric ton, which was the case in, February 20. And then look at early part of 22, the prices touched around $2,000 US dollars per metric ton. So you can see the, the volatility in prices from less than $700 to around $2,000 per metric ton. And similarly, you can see the soy meal prices. And we are not talking about a long time period. Look at 2021 and 22-23, only 3 years gap. So our total imports in terms of volume of edible oils increased from 13.5 million tons to 15.8 million tons. So approximately 16-17% increase. But look at the value of imports, which was about 82,000 crore of rupees in 2021. That increased to about 1.7 lakh crore rupees. So more than two times increase in our import bill within the period of three years. So that was primarily because of there's so much volatility in the international prices. So that what I'm saying, that we must achieve self-sufficiency
As I said, the dependence on imports is, as I said, neither desirable nor feasible. So what are the key issues when we talk about soybean in specific? And I think this low productivity has been highlighted by almost everybody, and I think we must accept that fact. Today we are talking about our productivity levels of about 1 to 1.1 ton per hectare. And the second important, problem with this is that you can find that our productivity is about 900 kilograms per hectare. It might go up to, 1100 or 1200 kilograms per hectare. So there's also high volatility in our yields, and that's primarily because of, this crop is little sensitive. If there is excess rain, you have a problem. If there is a drought, there is a problem. And recent years, we have seen that this climate change or unpredictability of weather is creating a lot of problems. We never heard about, the rains during October, but you would find when there's the harvest season, you would find rain. When there's a need for rain, there are no rain. So I think climate change is going to have very, very significant impact on our productivity and on our agriculture production overall. Second is, if I'm a farmer, I would look at my profitability. I'm not concerned about what happens to the industry, what happens to the nation, because at the end of the day, it's my, returns which decide in terms of what I should produce and what I should not produce. So today, if I look at, on an average, my returns from 1 hectare of land, if I grow soybean, it's less than 20,000 rupees. I'm talking about the higher side. So it's less than 20,000 rupees per hectare for a farmer. If I grow groundnut, if I grow cotton, my net returns would be in the range of about 35 to 40,000 rupees per hectare. If I go for paddy or maize, it's again almost 1.5 times or more than 1.5 times than soybean. So we must improve returns to the farmer, and that would happen through two routes. One is we need to improve productivity, and second is we also need to reduce cost. We were looking at the cost side, and Maharashtra, which is the second largest producer of soybean, and the cost of cultivation is almost double than what we have in Madhya Pradesh. And one of the reasons is that it's also a labor-intensive crop. So one is we need to really move towards more farm mechanization, where we are able to reduce our dependence on human labor. And the third, the problem is very high fluctuation in the market prices of soybean, and that's primarily driven by because the soybean is an international commodity. So what happens in North America or South America, that does have impact on our domestic prices. So how do we ensure that the farmer gets stable prices, they get remunerative prices? So we need to find out some alternative mechanism to ensure that farmers get better prices. And another dimension which almost everybody would, agree with me is today we are looking at soybean from, one is you produce soybean, and from soybean seed you produce soybean oil, and you produce soybean meal. And these are the two important, our main products from soybean seed. And a very small quantity of, for human consumption. But if you want to create that demand pull, impact on this sector, I think we need to diversify on the output side of it. So the share of your total, the production for human consumption must go up. And one of the things which Mr. Chaudhary also mentioned about is in terms of how do you make it more palatable to the consumers. So I think you need to do some kind of a generic promotion of soybean value-added products as the National Egg Coordination Committee does it. So they promote, consumption of eggs. So at one point in time, we also promoted, the consumption of milk. So probably I think association like SOPA can really look at the possibility that one is we work with R&D institutions to develop certain products which are easily consumable, which are more palatable, easy to cook, and then, generate that awareness through different campaigns so that there's a demand generation. And I can tell you, if you are dependent on soybean oil and soybean meal for feed, I'm sure that we will not be able to really transform this sector. So we must work on the output side of it. And government is, as I said, that Honorable Prime Minister has
repeatedly said that we must focus on, this Atmanirbharta, self-sufficiency, and I think it's a high time, and I think it's a great opportunity for the industry to, get into that mode. We have a huge program of National Mission on Edible Oil Seeds and National Mission on Edible Oils, that oil palm component, and I think that there is a tremendous kind of a scope to take advantage of that. And government has been and government is willing to work with the industry, because we need to work as a team so that we are able to achieve the stated objectives of this national mission. On price front, as a part of our commission's mandate, we have been really looking at that how do we incentivize farmers. And if you look at the last 10 years or so, our focus has been more on pulses, oil seeds, and millets in terms of our increase in MSP. And you find there's a significant increase in minimum support prices for almost all edible oil seeds, pulses, and millets. But price has its own limitation, because if you increase price beyond a point, and if there's no improvement in productivity, there's no commensurate reduction in cost, I think we become uncompetitive, both domestically and globally. So along with prices, we must work on the technology part of it, and only then we can achieve that. And we always talk about this public-private partnership, but I think we need to move beyond this, the double P model. We must move towards 4P, and I would include one is the public-public partnership, because today your R&D institution, for example, what ICR is doing, your state agriculture university may or may not be knowing that what they are doing. So I think we need to create more and stronger collaborations and this partnership between public institutions. I gave you an example of R&D. It could be across different ministries or different departments. And then third P becomes your private sector. And I think the most important, and which I could see is missing even in your this conclave, is farmers. So I think I would urge you to look at the possibility of inviting some progressive farmers, so that we hear out their concerns, their problems, and we also give a platform to them to understand the complex issues involved in that. So I would put it as public, private, and people's participation. And once we have these 4 Ps in place, I'm sure we can really transform this sector and we can revolutionize this sector. And we have again an example where we have been able to leverage on this collaborations and partnerships. This aspirational district program which was launched by government. Today you look at the performance of those aspirational districts. They achieved so much within the shortest possible time. I think it's an eye-opener for everybody. And I think that's a unique example of that how government can deliver by coordination and partnership with different departments and ministries. And now this PM Krishi Dhan Dhanya Yojana, which is similarly on the lines of your aspirational districts, where we are talking about identifying 100 most backward districts in terms of agriculture development, and then taking them at par with the remaining districts. And there's a huge kind of focus on developing those districts. So we are talking about the collaboration or coordination or partnership across different ministries. That's about 11 central government ministries. And we are talking about convergence of 36 central schemes. So 11 ministries or departments and 36 central schemes would be would have a partnership program to develop these districts. And I'm sure that would be again a very successful kind of our example. And in terms of allocation also, it's about 24,000 crores of rupees per year for 6 years. So we are talking about something like 1.25 lakh crores of rupees being invested in these backward districts. So I think the bottom line is that we must focus on technology. And I'm not going to compare our productivity levels with, let's say, North America or South America. Look at your own research, which shows that the potential yield of our existing varieties or technologies is somewhere around 2 to 2.5 times tons per hectare, and we are again struggling at 1 ton per hectare. So can we have a roadmap for improving our productivity from taking it from 1.1 tons to 1.5 tons in the next 4 years or 5 years, then 1.5 to 2? Because if we have the same, if we have the existing technologies,
So where is the problem? And one of the real problem is, in case of soybean, is I think availability of quality seed. Because the problem is that this is a little voluminous seed crop, so you need large quantity of seed, and I think neither government nor private sector can really meet that requirement. So probably we would need much more close partnership between government and even farmers organizations and industry associations to make sure that farmers get better quality seed at affordable prices. And I can assure you that if you are able to meet that requirement of farmers in terms of quality seed, I'm sure our productivity would go up from 1.1 to easily to 1.5, 1.6, and we can touch about 2 tons per hectare. And if we are able to achieve that, I think we would become really a net surplus in soybean. So we need to work on 3 areas. One is improving productivity, which requires continuous research and development efforts. Second is we also need to work on reducing our cost, and one of the components, as I said, is our human labor component. So how do we promote farm mechanization? So again, we need to work with the research and development institutions. And the third important is we need to really diversify on the output side of it. So don't be dependent on soybean oil and soybean meal. I think we need to go beyond these 2 products. So if we expand that basket, I'm sure that this sector would really transform and turn around. So I could see that there were a whole lot of sessions during these 2 days, starting from technology, from the market outlook, price outlook, sustainability. I'm sure that we would get better insights, and we look forward to your proceedings of this conclave and see that how we can, as a government, help in implementing some of those suggestions. So I wish you all the best, and thank you once again for providing me this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, sir, for the lovely, deep insights. Huge round of applause for sir. Everybody, come on. With this, ladies and gentlemen, let's move forward. Our next segment, everybody, it's time for the release of souvenir. So everybody, हर साल हम इंतज़ार करते हैं ईयरली इस न्यू मैगज़ीन का, और आप सभी के सामने इन मेमोरीज़ को, इस मैगज़ीन को सामने लेकर आया जा रहा है. And we are very delighted and happy. Yes, everyone, get it ready. और अब दोस्तों वक्त है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जो होने जा रहा है फेलिसिटेशन. सो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर शताद्रु चट्टोपाध्याय सर जी को. यहाँ पर फेलिसिटेट करेंगे हमारे गिरीश सर, ज़ोरदार तालियों के साथ. आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही डिमांड है कि तालियां ज़रूर बजाइए. बिकॉज आप सबका साथ यहाँ पे होना चाहिए. आप सब अपना प्यार जो है तालियों के साथ यहाँ पहुँचा सकते हैं. सो क्लैप बाय योर हार्ट एवरीबॉडी. डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी सर को यहाँ पर फेलिसिटेट करेंगे पाठक सर. Yes, come on everybody. A big round of applause. और हमारे विजय पॉल शर्मा सर को यहाँ पर फेलिसिटेट करेंगे देवीश सर, our chairman. Yes, ladies and gentlemen, come on, जरा तालियों के साथ आप सब इस वक्त को खूबसूरत बना दीजिए.
और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गिरीश मतलानी सर से फॉर दी वोट ऑफ थैंक्स एंड उसके बाद एक फ़ोटो सेशन के लिए। हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर विजयपाल जी, डॉक्टर चौधरी जी, डॉक्टर बंदोपाध्याय जी, आप सभी का जो एडवाइस और गाइडेंस हमें मिला है फॉर प्रोग्रेसिंग ऑन द राइट पाथ इन दिस इंडस्ट्री, उसको हम ध्यान में रखते हुए हमारे डायरेक्शन और एफर्ट्स में हम चेंज लाएंगे ज़रूर। आपने जो प्रोडक्शन पे फोकस करने का बोला है, और हम सब भी महसूस करें कि प्रोडक्शन बढ़ाना सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि किसान अदरवाइज़ सोयाबीन से दूर होता जाएगा। तो ये हमारी बेस्ट मोस्ट एसेंशियल नेसेसिटी है। आपने टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पे ध्यान देने का बोला है। हम कल से यही बात करेंगे, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा और नए एप्लीकेशंस पे ध्यान देने से ही हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो भी स्पीकर कल से बात कर रहे हैं वो कुछ नए एप्लीकेशन, नए टेक्नोलॉजी, नए यूजर्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी सोच बदल रही है और आपके गाइडेंस से डेफिनेटली हम, और आपके गाइडेंस और सपोर्ट से हम इस काम को डेफिनेटली अच्छे डायरेक्शन में ले जाएंगे। इस कार्यक्रम में आए हुए देश भर से जो लोग आए हैं, को साउथ से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, सब तरफ से लोग, सारे देश से लोग आए हैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। आप सभी का कॉन्फ्रेंस के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे स्पॉन्सर्स और सारे जिन लोगों ने अपने बूथ्स या डिस्प्ले करें, नई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करी, उन सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद देता हूं। और सोपा की हमारी टीम और हमारे सारे जो ब्रोकर फैटर्निटी है, जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को ये मूर्त रूप दिया है, उन सबका सोपा मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां। हाँ जी, और अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर, जो है हमारा टेक्नोलॉजी सेशन। और इसके लिए मैं डाइस पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे टाइटल पार्टनर डीवी चामे सर को, मिस्टर नागेश सर को, डीवीसी प्रोसेस टेक्नोलॉजिस्ट एंड मिस्टर इमराह एल्फ बुलर स्विट्जरलैंड। जोरदार तालियों के साथ इन सभी का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। यस मिस्टर इमराह एल्फ। यस एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट सेक्शन, जहां पे हम चल रहे हैं। और इससे पहले हमारे सभी डिग्निटीज़, हमारे जितने भी स्पीकर्स थे, सबने अपनी बातों को बखूबी हम सबके साथ पे रखा है और ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल रहा है। एंड नाउ चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। स्टेज पर जुड़ने जा रहे हैं डीवी चामे सर, नागेश सर एंड इमराह सर। I request all the dignitaries and guests, please sit on the dais. Please, sir, have your seat. And now मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी नागेश सर से for the presentation. Yes sir, please join us here. Please everybody, huge round applause for Nagesh sir. Value addition to byproducts generated in oil refining by producing oil chemicals. DVC process technologies. जोरदार तालियां हो जाए, नागेश सर is here. Okay, can you slide? We need cue here for this slide. अच्छा वो चल जाएगा वहाँ. Okay, this is the next. So good afternoon everybody. So my name is Sri Nagesh Jasti and I am working in DVC as a GM businessman for oleochemical industry. So now we need to discuss about oleochemicals. Okay, DVC Process Technologies headquartered at Pune is a technology-driven, innovation-driven
and with moral values. Okay, because of that we are succeed so much in a competitive market. So now we have a dedicated team for production, and their production competitive team handling the task related to new projects as well as upgrading projects. So we are giving, so now industry having so many companies having less efficiency plants. So they need to upgrade their efficiency, otherwise they will not be in the market. So that's, we are auditing the plants with energy efficient manner, how they can improve further, otherwise they can't be survive. So next, so what are the oleochemicals? Oleochemicals are industrial chemicals derived from natural oils and fats and its byproducts. So what is this special? So they are a new renewable and bio-based alternatives to petrochemical. So now petrochemical, what are making from petrochemical, we can make from edible oil and its byproducts. So this is the oleochemical basic setup. So you can see one first step is a splitting. Splitting mein we will do fat with raw material fat or its byproducts, and water is the reagent. So under high pressure we will get the sweet water and fatty acids. So fatty acids can be hydrogenated, change it to hard product like stearic acid, such kinds. And whatever getting sweet water, we need to be treatment and then going to evaporation for removing excess water, and then it is going to the distillation. So this is the basic 5 steps needed for any basic oleochemical industry. So this is the main products from oleochemicals. So saturated fatty acids and fatty acid methyl esters and fatty alcohols, fatty amines, soap and glycerin. So these are the main products coming from oleochemical industry. So these are the secondary products from oleochemical. So if you make the, if you take the raw materials from byproducts, then this basic setup is enough. So we can survive. But if you want to take from oil to oleochemical products, then we need to go for secondary products like surfactants, detergents, biolubricants, and fatty acid amides, and fatty alcohols, and tocopherols. Tocopherols and stocosterols we can make from refinery distillate, soybean distillate. And fatty acid derivatives, stearates and laureates can utilize in grease industry and lubricant industry. And this is the industrial application. Okay, home, personal care, soap, shampoo, cosmetics, detergents, and plastics. Polymers, plasticizers, stabilizers and coatings, and food nutrition, emulsifiers as a food additives, lubricant industry, biodiesel, hydraulic fluids, and pharmaceutical also utilizing exceptions and ointments and capsules, agrochemical adjuvants and surfactants for pesticides formulations. And what are the advantages of oleochemicals? So these are the renewable, biodegradable and sustainable feedstocks. Market demands and regulatory support will be important further. So definitely future will grow because of nature affecting our actions. Okay, because we are adding carbon to earth. So that we need to be compensated by producing oleochemical products which are safer, non-toxic, environmental friendly, and wide range of molecular structures. Whatever we are making from petrochemicals, all products we can make from edible oil industry, or
byproducts from through oleochemical. And refined, okay, nature giving us many things, but we are ultimately, end of the day, we are giving nature to carbon footprint. So that at least we need to, as a human being, we need to safeguard of our earth. Otherwise, our things will not move. Today, so many people are telling, okay, climate changes. It is not supporting for cultivation also. So all these damages because of, we are increasing because of our actions, carbon print is increasing. So we need to compensate by producing at least by, waste raw materials to oleochemicals which are safer for earth. So that is actually our responsibility to do it. So these are non-toxic, so that is a good thing. And value addition agricultural waste feedstocks, UCO and acid oil. UCO also, in future definitely UCO collection will be increased because now our FSSI is have some regulations on food manufacturers. Okay, those who are consuming 50 liters oil per day, they need to show the records by producing UCO, because UCO having the FSSA having some policy and guidelines when to, from where, from whom to get this UCO. UCO means after repeated heating of refined oil, after 25% of total poly components, we need to discard it. We cannot use completely. So the people, big people definitely follow the FSSI. So collections will be increases, and collection agents and those who are making biodiesel, they will also registered with FSSI and they can get the used cooking oil. And feedstocks for oleochemical industry. Okay, vegetable oils. These are costly and these cannot be used simply for making fatty acids and glycerin. So if you want to survive, we need to go for secondary products like fatty alcohols and pesticides, emulsifiers and emerging. So like that, vegetable oils and next animal fat. So beef, tallow, mutton tallow, lard, poultry fat, these are waste. These can be easily we can cash it into the oleochemical and byproducts and wastes, acid oil. So from refinery, we are getting acid oil and deodorized distillate, soya, which are very economical for processing in oleochemical. Spent bleaching earth, used cooking oil, fatty acid distillates, all these things are as a byproducts. And special natural waxes, beeswax, canola wax, sunflower wax, rice bran wax, and these also having so much of useful in cosmetic industry. And algae oil, this is a future. Government has to take a decision on all these things, and we need to produce algae oil which is useful for oleochemical industry. And carboxylated derivative feedstocks, glucose, sucrose, starch fermentation and biosurfactants, biovolins and fatty alcohols. From glycerin is a byproduct of biodiesel and oleochemical. This we can convert into the epichlorohydrin and PDO esters. These are used as a bioplastics. So plastic currently we cannot eliminate in the world, but there is a regulations, but nobody stopped things. But alternatively, we can make bioplastic from glycerin. So this is the good future. So these are the process in oleochemical. First is flat splitting, and oil are converted into the fatty acids and glycerin, and transesterification. This is oil transfer to the other ester like methyl ester. And esterification, fatty acid plus methanol, we can make it to the biodiesel. This is the esterification. And fatty alcohol production, hydrogenation, adding hydrogen to the double bond. And derivatives. In these derivatives, so many are there.
fatty alcohols and amides, amines. These are plasticizers. And we will go deep about flat spitting. So this is the reaction where 1 mole of triglyceride can react with 3 moles of H2O and release 3 moles of fatty acids and 1 mole of glycerin. This is the basic reaction for oleochemical industry. And conditions for reaction 200 to 260 degrees and 40 to 50 bar, and water we need to give as a reagent almost 0.8 to 1 ratio we need to give per complete spitting. But actual requirement per ton we need only 65 kgs, but for forwarding reactions we need to add almost 0.8 to 1. And this is no need of any catalyst because of high pressure and high temperature. So products finally will get crude fatty acids and glycerin as a sweet water. And process principle. So this is the hydrolysis reaction and continuous countercurrent spitting column having, and this is the endothermic reaction. So need temperatures. So we are giving high pressure steam for forwarding the reaction. So residence time almost 4 to 5 hours, and conversion more than, if it is a stearin, more than 99.5 will come. Based on feedstock quality, it will conversion 95 to 99. And this is the basic flow and in a spitting. Okay, first feed need to be preheated and deaerated with both fat and oil, which are fed to the next spitting column. This is the high pressure spitting column. Then after high pressure, it will separate the two layers by flashing. We will get crude glycerin and sweet water, and sweet water then going to the concentration section, and it will go to the next treatment and evaporation. We will get the crude glycerin. This is the basics of spitting process. And this is the transesterification of biodiesel. So take oil plus 1 mole of oil need 3 moles of methanol, and give the 3 moles of FAME or biodiesel, and we will get the glycerin. This is the user alkali cluster at low temperature, 60 to 65, and we'll get biodiesel and glycerin. So application glycerin biofuel, and it is actually biodiesel now not viable for fuel as a fuel because of raw material price is not accepting. So then this biodiesel can be converted into the other feedstocks like fatty alcohols. These can be now sustainable, and price is good for making this. So those who are having biodiesel plants, they can plan to make it fatty alcohols and other products which are viable now. Okay. And esterification. Esterification is take from fatty acids and methanol in the presence of enzyme. So we'll get the FAME or biodiesel and water. And application, this is also oleochemical proven, but as of now, this biodiesel may not be sustainable for employer to put the plant for sustainability because of feedstock not viable as of now. Okay, but we can convert into the other products which are valuable. So now we are discussing raw materials, what we planning. So now we are discussing only these 4 raw materials which are very encouraging, for making oleochemical plants. One is sun soya fatty acids, acid oils, and from that we can make
sun soya distillate of 130 IV. These can be utilized in paint industry, and this 130 IV next convert into the dimer, which is used in plasticizers. And production of tocopherols and distilled sterols from soybean deodorized distillate, which is a byproduct of soybean refinery, and used cooking oil. This also in future definitely used cooking oil collection will be increased, and this can be a good feedstock for oleochemical industry. Then crude glycerin. So crude glycerin, plenty of crude glycerin is available in market with a cheaper rate, because last 10 years you take, so crude glycerin range is 20 rupees to 30 rupees. Now today also in the same range. So why? Because all people are making only up to crude glycerin to distilled glycerin. So because of only distilled glycerin we cannot sustain. So we need to make it bioplastics. So then this crude glycerin can be very encourageable feedstock for bioplastic. And we will go details about the soya distilled fatty acids from acid oils. We will go to the small description. So now soya sun acid oil is having lot of contaminants, lot of, so you can see, so generally FFA can be 65% and monodi-tri altogether 30%, and remaining 5%, almost 1% is a moisture, and gums 3% and 2% unsap. This is what typical industrial soybean acid oil. And moisture 1%, insoluble gums others, so 4%. Acid oil, soya sunflower containing high FFA, generally 65, and having phosphorus content almost 500 to 600, and minerality having 200. So these cannot be processed until unless some treatment needed. So this and industry follows generally pre-treatment of acid oils following conventional washing and bleaching. This is not affecting much. Whatever you are doing, okay, water washing cannot make it into the 0 ppm of minerality. So 0 ppm must be needed before fed into the spitting column. So we are not achieving. So even 5 ppm also affect the long lasting of spitting column. And phosphorus also we cannot remove from 500 to 100. So more than 100 also we could not able to remove by conventional pre-treatment of acid oils. This is the current challenge industry facing. So now in DVC having some advantages that we have a refinery plants where we are doing some experiments, what are we are planning that we are doing in our realistic manner, and like that we done acid oil treatment in our plant and succeed. So more than 50% gums reduced by using of MGMA. This we call it as a enzymatic pre-spitting. See enzymatic pre-spitting. So this process simply I can brief you. So take the acid oil and neutralize with a small mild base, so like sodium carbonate, and make it pH 6.5, which is compulsory before adding NGM. Okay, after adding NGM, 1 kg per ton needed. So 10 hours require time. So our target is gums removing by spitting the triglyceride which are having 30%. So generally 30% is the triglyceride remaining, 65% is free fatty acids. So we are removing gums by spitting of mono, di, tri by increasing 15% FFA. So that means 65 plus 15. So 80%
ultimately we get the FFA conversion. Accordingly, because we are targeting directly to triglyceride and mono di to spit. By spitting, we are automatically reduce the gums, which are insoluble in water. And so this spitting we will get the glycerol and spent death fatty acids light. Okay. And conventional pretreatment, this is what challenges. No much reduction in P content, not more than 20 to 25%. Minerality cannot be zero. So high loss of gums due to washing, emulsion problem, high effluent water, acid water coming into the effluent. So, so these can be overcome by enzymatic. This can improve your yields for next process also. Let's say now people are doing acid oil is the cheapest oil available now. So two industries are using it. One is biodiesel industry and the other one is spitting industry. So both are doing conventional pretreatment. So because of that, they could not able to remove even 20% of the gums. Because of this conversion, next stage conversion also not possible. Because of that, they are getting after spitting, they will go to the distillation where they will get the loss of almost 20 to 25% as a pitch. So because of that, it is not viable. So if you go into the enzymatic pretreatment, then definitely 4 to 5% will reduce the pitch residue. So 16 we are targeting. So same biodiesel also. Biodiesel people also, if they are doing conventional pretreatment and do glycerolysis, then transesterification, then distillation. So where they came to know what is the yield. So biodiesel people currently getting, by using acid oil, getting 30% residue as a loss. So because this is eliminating by proper degumming of acid oil before treating into the further process. Okay, keynotes, conventional, simple, but higher loss and wastewater, and P content not reducing noticeable, and enzymatic, low phosphorus, better yield, sustainable, but higher OPEX. But OPEX can be compensated by, we are getting yield now, so we can compensate that. For 4-5% means ultimately we will get, finally we will get the better industrial growth for this. And now user cooking oil. So user cooking oil, it is the process. Okay, whether you go for biodiesel or after that biodiesel is not viable, you can go into the next, this one, lubricants, biolubricants, pentatetranol and trimethylene propane. So these are used as a biolubricants. Okay, process route. Okay, if you want to make biolubricants from user cooking oil, so this is the process. First, we need to remove pretreatment and remove the unwanted sediments, all these things, and then FFA reduction by deacidification, then go into the regular transesterification. So then this biodiesel can be converted into the double transesterification with TMP or PE esters. So these can be utilized as a biolubricants. So PE esters are generally offer better high temperature performance and stability compared to TMP esters. Okay, final products from user cooking oil. So we can make PE esters and TMP esters and fatty alcohols. This is based on market requirement and price viability. If biodiesel is not viable, these are the three things better price will become.
So present future opportunities in the oleochemical industry. Okay, market size and future market size and growth, key drivers, trends, and present opportunities and future opportunities. Okay, current market growth USD $30 billion current year, and global projected market in 2034 by $50 million. Average growth 7 to 8% expecting, and fastest growth Asia Pacific because India, China, and we have a more feedstock advantages. And major segments fatty acids and glycerol esters and FAME. And demand sectors personal care and detergents, biolubricants, and food and pharma. Key driving factors and trends. Okay. First is sustainability and environmental regulations, and natural bio-based products demand increasing year by year, because ultimately we need to save our earth by using these products. Technological advantages, enzymatic process, biocatalyst, and alternative feedstocks, waste oils, microbiological lipids, regulatory policy support for biodiesel, bio-based chemicals, regulatory push on ban on toxic petrochemicals, and surplus glycerin need to be value-added conversion, not just like refined glycerin. This may not have much market, but other value product, bioplastic, this is the looking good in future, particularly 1,3 propanol oil, bioester, plastic, cosmetic solvents using in, and epochloride, epoxy resin, coatings, adhesive. And present opportunities, demand for natural and sustainable products. Natural and sustainable products, and people are loving to use these products because of saving environment and non-toxics. Especially suppose if you take the wax, so now wax nobody is producing from sunflower, and not value added making anybody, because industry wants cosmetic, they are using currently non-toxic waxes from petrochemical industry. These can be replaced by our food grade wax. So there is a lot of opportunities in wax manufacturing and refined wax making, so many, and specialty products, so high quality fatty acids and biolubricants, fatty acids, amides, tocopherols. So tocopherols is the cheapest source is from soybean distillate. This is also very economical process. And biodiesel is currently using renewable energy, but pricing is the issue. And green surfactants, biodegradable detergents, natural personal care cosmetics. These are the opportunities. And future opportunities, bio-based polymers, biodegradable plastics. So like from glycerin, future may everybody making bioplastic. So enzyme innovation to cut the cost. So currently enzymes are more costly, non-enzymatic processes are more energy consuming. So this need to be balanced. This is work is going on. In future, enzyme will be reduced. So everybody using this by eliminating the high pressure and high temperatures. And advantages of biofuels,